तो दोस्तों वेलकम बैक टू होराइजन फॉरबिडन वेस्ट। और प्रीवियस पार्ट में हम लोग ने कुछ ब्रिसलबैक्स को हराया और एरेंट से भी मिले। और जो उसका नाम क्या था, स्टूडियस वडीस, वो बोला कि जब तक आई थिंक विसल या बेल कुछ तो है, जब तक वो नहीं बचता, यानी कि ऑल क्लियर का सिग्नल नहीं आ जाता, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो जाके उल्विंड से देखते, बात करते। We are on the same side here, Ulfric. The bristlebacks threaten us all. Oh, drop the act. We all know it was the Carja who let the bristlebacks into the valley, sent them straight through the gates of Barren Light. That is preposterous. Why would we let dangerous machines into our own land? You mean the land that honest Osram laborers work tirelessly with no say in its governance? The land that, should you sign the decree, Oh, you and that damned concession decree. would be managed by the people who actually live and work on it. ओके, लग रहा है कुछ तो आर्ग्यूमेंट हो रहा है। और लूट एंड लेट्स टॉक। इसके पास साइड क्वेस्ट भी है, लेकिन फिलहाल तो ये क्वेस्ट खत्म करता है। What do you want, Ulvund? Some kind of payment? My dear magistrate, you think I can be bought? If you want that whistle blown, all you have to do is have your soldiers remove the bristlebacks and sign the concession decree. Face it, what other choice do you have? Hi. Savior, what auspicious timing. Might we discuss a matter of importance to the Sundom? We might. Later. Very well. I shall be waiting. So, the savior herself, Walloper of Durval, gutter of youth. Maybe. I've heard many tales of your beauty and heroics, my fierce lady warrior. Ulfund Freeholder, at your service. So, what could have dragged you away from the fine silks and wine of Meridian to this smudge of a settlement? Your saviorly attention must be needed elsewhere. I'm here for the embassy and The embassy? Why, by the forge. Ah. Greater gears for greater matters. Guess that means you'll be moving on. once I've dealt with any problems around here that need my saviorly attention. Ah, the bristlebacks, of course. Got to get rid of them if you want that embassy to take place. Well, best get to it, hey? And off you go. Not so fast. ओके, वर्क स्टॉपेज के बारे में पूछते हैं पहले। You ordered the work stoppage? Indeed I did. We're laborers, not soldiers. Until the Karja clean up their mess and give us the fair deal we deserve, I'm not risking Osseram lives. Fair deal? You mean your concession decree? It's not my decree. It's on behalf of all the good Osseram laborers of this land who do all the back-breaking work, while only the Karja reap the rewards. All we're asking for is the ability to share in this prosperity for a land worked by the people, for the people. Right. And just how much would be your share? Only an amount appropriate to my contributions to this community, of course. तेरे को किसने अपॉइंट किया? If Chainscrape is on Karja land, shouldn't a Karja be in charge? Who appointed you? The sensibilities of good Osram folk, of course. You think a Karja can head this whole venture? Ah! The magistrate can barely make the trek from Barren Light without losing a few screws. So you have no real authority then. People only follow you because you say so. Loudly. Anyone who has followers has authority. I've been with Chainscrape from the beginning. I mean, I'm practically its founder, and its honest folk know I'm indispensable to its success. चेन स्क्रैप के फाउंडिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी इसके You पास? said you founded Chainscrape. Somehow I doubt that. Me too. Practically founded, I said. I alone saw its potential when it was just a smattering of tents in Barren Light's shadow. I invested in the mine, convinced some friends back home to do the same, and here we are. You could say Chainscrape is what it is thanks to me.
Oh, so you're not just standing around and profiting off everyone else? Not at all. Sure, I make a little return on my investment here and there, but my main priority, as it was from the beginning, is to look after the well-being of these honest, working Osram. स्मॉल रिटर्न कितना स्मॉल है? नंबर्स बता. तेरे और कारजा के बीच में क्या प्रॉब्लम You है? don't seem to have a high opinion of the magistrate. Well, I refuse to play nice to some fancy-robed parchment pusher when my fellow laborers are being bullied, intimidated, and taken advantage of. How noble of you. Noble, ha! Born with a hammer in hand, I was. Nobody handed me anything or dropped opportunity into my lap. Everything I've achieved, I've done on my own. And where is this hammer now? The burden of leadership forced me to set it aside. The Carja risk nothing, while demanding that good Osram gamble with their lives out there. Someone had to step up and say no more. ओके. चलो I cleared विसल out all ब्लो the कर. bristlebacks. Oh, you did? Now that you've recovered from your shock, time to blow the whistle. Oh, there, not so fast. I'll have to send someone out to confirm the kills. Make sure the valley is safe again. It shouldn't take more than a day or two. No. You blow the whistle now. These are innocent Osram lives we're talking about here. Surely the delay... Either you do it now, or I will. Ah, I knew you could do it! Friends, gather round. The savior of Meridian has done it again. What? The Bristlebacks are defeated. You, What? sound the whistle. Chain Scrape is open for business. Terrific. Yay. And Ulvund has agreed to personally pay every worker their lost wages. Yeah, That's more like it. yeah. Woo! Ha Yeah! Yeah! Don't you have an embassy to get to? Yeah, I guess I do. बेचारे का लॉस करवा दिया इलॉय ने. Merchants are now available. You can purchase new equipment, restock your resources, sell unneeded items at the merchants. Items in the valuables to sell category are always safe to sell. Stitchers outfit बनाते हैं, hunters weapons, herbalist potions क्या, और cooks food भी है इसमें. nice. ओके चलो. Now the Chain Scrape's back to work. Merchants should be open to trade. I Okay, should see if they पहले have anything useful before I send Wadis. ये क्या है वैसे? स्टैक है क्या हमारा? I यस. see what that Karja magistrate wanted. I bet he's in the tavern. पहले वाडीज के पास जाकर बोलते हैं. हेलो भाई. You heard the whistle. Time to go. But I was supposed to have 3 escorts. I'm off to Baron Lightwaddies. Like Aloy said, Captain's orders. You can stay here. Abandoned to the riffraff? I think not. Guess you're coming with me then. See you there, Aloy. Well, now that that's done, the embassy can finally get underway. If I can get through it, I'll be able to track down Silence. Hades. Maybe even a Gaia backup. Guess I could head straight for Baron Light. Or poke around the Daunt some more first. And maybe take Petra up on that drink. बच्चे खेल रहे. एनीवे देखते हैं आर्मर के पास क्या है. आउटफिट ऑसरम एक्सप्लोरर, नोरा हंट्रेस. चलो ये ले लेते हैं. बाय एंड इक्विप.
अच्छा दिख रहा है, येलो। और आई थिंक ये भी था ना, ये आई थिंक वेपन्स वाला है, इसके पास भी दिखता है। Brought out only the good stuff for you, Red. Seeing as you got that whistle blowing. Hey, I've been waiting to get my lucky hammer fixed for days. You haven't done anything useful like getting rid of any bristlebacks, though, have you? Take your time. I promise you won't be disappointed. ओके, फायर हंटर, इसमें पॉइजन और फायर है। वॉरियर बो, commonly used by the Karja military. This fast firing bow is best suited for close range encounters. I think फायर वाला ले लेता है, बाय एंड इक्विप, और ये वाला, और शार्प शूटर भी लेता है लेकिन चार्जर चाहिए। ये स्नाइपर वाला बो है, आई थिंक commonly spotted atop Plainsong's dishes. This bow has a slow firing rate to deliver precise, powerful shots at long range. Which can destroy components instead of tearing them off. Come back anytime. Yes. Gonna get this fixed. I can fix your tools. Afraid there's no fixing you. An ammo that deals fire damage is now available in your inventory. Use your focus to scan enemies and see if they are weak to fire. Hitting them with fire will build up to the burning state. Once in this state, they are set on fire and take damage over time. Shoot blaze canisters with fire arrows to detonate them and trigger a large elemental explosion. Okay, nice. I think 2 एलिमेंट आ गए हमारे पास। अगर इसको काउंट किया तो 3, इसको भी काउंट किया तो 4। एनीवे आई थिंक अब हम लोग साइड क्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर ओवरराइड अ चार्जर। नहीं, ये डीएक्टिवेट कर देता है, और हमें आई थिंक यहाँ पे जाना है। तो लेट्स सी, पहले ये वाला क्वेस्ट करता है। ऐसे कोई रैंडम सिलेक्ट कर रहा हूँ। वेट, इसके ही अंदर है क्या? इसके अंदर भी है। ओके ओके, यही है ये। चलो ये वाला करता है। सही टावरन है। ग्रीटिंग्स। यहाँ पे क्या है? किचन रहेगा ये पूरा। यस, किचन है यहाँ पे। श्योर, आई टेक ओवर। और खाना अच्छा बनेगा या नहीं उसकी गारंटी नहीं ले सकता। पोशन लेने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। Who are you supposed to be? From the sacred land. आई एम द सेवियर। फेमस हूँ मैं। लेट्स सी, यहाँ पे क्या है? ये क्या है? मशीन स्ट्राइक। पहले क्वेस्ट करते हैं और बाद में देखते हैं। आई थिंक मिनी गेम रहेगा वो। मशीन क्या था उसका नाम? बहुत जल्दी चीज़ें भूल रहा हूँ मैं। मशीन स्ट्राइक मिनी गेम रहेगा कोई तो। लेकिन पहले ये वाला क्वेस्ट करता है, देखता है। Hey, Milda. I took some of your stew last time I went into the wilds. Kept me going for a week. I felt like I could have put a strider in a sleeper hold. Enjoy it while it lasts. Sounds like you're serving up some impressive provisions here. Not again. You can have the discount too, but you'll have to come back later. I think you have me confused with someone else. Oven didn't send you? No. Oh, my apologies. It's just that his minions won't stop pestering me. Now I've even worn out my special grill.
Since I'm in the midst of a crisis, perhaps you could skip to what it is you wanted? Some of your food? Of course. उल्वेंट के पीपल शायद परेशान कर रहे हैं इसको। हेलो पूछते हैं इसके बारे में। Causing you problems? Oh, yeah. They constantly demand my best, but the equipment I need to make my signature dishes isn't built for batch cooking. And don't get me started on the Ulven discount they feel so entitled to. And if you refuse? I make meals. No trouble. और ये क्या है, टैवर्न के बारे में भी पूछता है। How did you end up in Chainscrape? Heard about a new and upcoming town at the edge of the frontier. Where there's a town, there's a tavern. I was in need of work. So I got myself out here and started cooking. Some of these people had never tasted proper boars and berries stew before. Anyway, next thing I knew, people kept coming back. Guess they like my food. Or the ale. Food. Your last customer mentioned your cooking really kept him going out in the wild. Where I'm headed, I could use some of that. I would be happy to oblige, especially since you have the decency to ask pleasantly. But my special groove griddle is no more. Without it, I can't cook any of my signature dishes. I hate to think what'll happen when I'm forced to refuse Ulven or his goons. Even if I already had the right ingredients, there's nothing I can do. Unless you can source me a temporary replacement? What do you need? For the ingredients, a few pieces of decent wild meat, and I'd say a big handful of bitter leaf stems. That'll do. As for the griddle, a corrugated metal panel might suffice until I can have a new one forged. You'd likely find one in a scrounger pile if you follow the river to the northeast. Don't worry, I'll clean it first. You'll have no issue finding boars and bitter leaf on your way. Assuming you're as much a hunter-gatherer as your clothing suggests. Thanks, Mildef. I'll keep an eye out. So that's what gratitude sounds like. And don't let anyone push you around, okay? If you say so. Mildo. Already got enough wild meat. Just need to pick some bitter leaf and grab a metal panel from a scrounger pile. बेटर लीफ भी हो गया ऑलमोस्ट। अच्छा था ये बंदा, इसको बुली कर रहे हैं लोग। चलो स्क्रॉन्जर, ये भी सुना हुआ नहीं लग रहा है। I could get around faster if I find a charger to override. अरे नहीं, यहाँ से ओके, यहाँ से जाना है। 500 मीटर। ओके, इतना दूर जाना है। मे बी हम लोग टेलीपोर्ट कर सकते हैं ये कैंप फायर में, लेकिन उसने बोला बिटर लीफ ऑन द वे मिलेगा हमें। ये तो नहीं है बिटर लीफ। यस, मिल गया। I think I have enough bitter leaf. चलो अब आई थिंक भागना ही पड़ेगा। टैप स्क्वायर। इतना इतना स्लाइड। ओके, कुछ ज़्यादा ही डिस्टेंस है स्लाइडिंग का। मेडिसिनल स्काई चेन स्क्रैप यहाँ पे। वो ओ भाई कोई नहीं है यहाँ पे। Need to get data from the cauldron if I can find one. आजा भाई आजा आजा। ओके, इसको नहीं 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 दिख रहा। मेरे को लगा स्कैन में दिखता है इसको। नहीं, डाउन और थ्रो नहीं। चलो ठीक है। रिजवर्ड, भागो भागो यहाँ से।
चलो स्प्रिंटिंग का एनिमेशन भी अच्छा है, लेकिन मेरे को जॉगिंग का ज़्यादा पसंद है। वो ये हमें चाहिए था, यही ना? आई थिंक Should hit it with frost ammo. यस। फैंग हॉर्न, आई थिंक ये प्रीवियस गेम में भी था, ड्रिलिंग वाला मशीन। वो भाई कौन है यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं है। धीरे से जाता है और आजा भाई आजा। और ये ले, Not my chance. मरा नहीं। इसका ये वीक पॉइंट है। एक गया और ओ भाई क्या है ये? 2 hit kill। एक्चुअली इससे याद आया, हमारे स्किल्स भी मिले हमें बहुत सारे, लेना पड़ेगा। Resist more damage when in critical health state. ओके। और automatically recover health sooner when in critical health state, ये भी अच्छा है। और ये क्या है? Carry more medicines। ये बाद में लेता है, हेल्थ पोशन का भी बाद में लेता है। दिस इज अ वेपन टेक्निक विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स पेंटागोनल शेप। स्किल्स इन दिस कैटेगरी अनलॉक अ पावरफुल न्यू अटैक फॉर ऑल weapons in their class. Weapon techniques use up weapon stamina which regenerates over time. वेपन स्टैमिना पता नहीं क्या है। कंसंट्रेशन का बूस्ट, ओके। रिकवरी भी, और ये भी कंसंट्रेशन का ही रहेगा आई थिंक। नाइस। और नीचे का अनलॉक हो गया रहेगा ना इससे सीधा। इसको अपग्रेड करना है मेरे को। 25 से 50 होगा आई थिंक। लेवल 1 का है ना, लेवल 2 का। चलिए, आई थिंक फैंग हॉर्न को तो हम लोग डिफीट नहीं कर पाएंगे। 2 हिट में मर रहे हैं हम लोग, तो फिलहाल तो क्वेस्ट ही करते हैं। और बच गए। टैग और इसके पीछे भी है क्या? टैग। आ जा भाई, ये ले। सर्च। ओके, क्लोज। देख लेता वो हमें। चलो, जंप या रोल। ओ भाई, उसके तरफ नहीं जा सकते, ये आ रहा है। आजा भाई आजा।
ये तो गया। और अब उसने देख भी लिया, फिर भी चलेगा। जल्दी जल्दी जल्दी। और ये गया। चलो गए सब लोग, आगे बढ़ो। बोर मीट, फास्ट ट्रैवल के लिए आई थिंक मीट या हाइड लगता है, दोनों में से एक। और बोर की आवाज थी। ओके, मशीन नहीं था। ओके, कौन है ये लोग? स्क्राउंजर। पता, ओ इसको वो स्टार्टिंग एरिया में फाइट किया था हम लोग ने। Moldov said I could find a metal panel. कोई नहीं, इसको तो मार सकते हैं हम लोग। और ये ले, ये गया। आ जा भाई, तू भी आ जा। हेडशॉट। और ये ले, और ये ले। और दो है। ओ भाई, ये ले, ओ भाई, गेटअप एलो है। इतनी देर भी नॉकडाउन मत हो जा। नहीं जिंदा है, मेरे को लगा मर गया। आमो, अब भाग रहा है। गया। हाँ आई थिंक सब लोग गए, और मे बी नॉट, म्यूजिक नहीं गया। मतलब हाँ जिंदा है। और मारो मारो। गए, अब सब लोग गए। Okay, now to look through the scrap piles for a metal panel. म्यूजिक चालू था तो आई एम श्योर कोई तो बचा ही रहेगा। रिसोर्स कंटेनर, स्क्राउंजर। क्या स्क्राउंजर प्रीवियस गेम में था? बरोवर तो नहीं था। 110%। बरोवर जैसा ही वो वॉचर था आई थिंक। अरे भाई कि पहले आ जाते, साथ में फाइट करते। पहले आते तो साथ में फाइट करते। कोई नहीं, सब शो खत्म होने के बाद आ गए। पंचों की आवाज। इस पे आई थिंक चढ़ सकते हैं हम लोग। यस, शायद वेपन्स डॉज करने के लिए, उसके जो लेजर वाले वेपन्स है। और ऊपर से शूट। सर्च स्क्रैप पाइल। Metal panel. I would check another scrap pile. लूटो। ओके, और एक स्क्रैप पाइल है। लेट्स सी, सर्च। प्रोसेस्ड मेटल ब्लॉक, शेल वाटर। और कहाँ पे है मेटल? इसको तो लूट किया हम लोग ने। शायद हमको ओ इधर भी है, इसमें मिल जाएगा आई थिंक। यस, I have मिल everything गया। I need for Moldov. Good thing too. I could use a decent meal.
चलो वापस चले। आई थिंक इसमें वे पॉइंट डालता है और वहाँ से फास्ट ट्रैवल फ्री में हो सकता है। चलो पहुँच गए। बोर अटक गया था। अरे भाई मार। ये गया। प्रिस्टीन टूथ। नहीं नहीं, कैंप फायर पीछे है। गलत जा रहा था मैं। इधर आई थिंक एक क्लाइंब करने का भी था कुछ, तो ये रहेगा आई थिंक। एनीवे पहले उसको ही देख के आता है। फास्ट ट्रैवल और यहाँ पे हो सकता है आई थिंक। यस, R2 कंफर्म। चेन स्क्रेप। Ah, there you are. I happen to receive another visit from Olvin himself. He was pushy, but I stood my ground. And dare I say it, I even got my own back. Yes, I did. I'm listening. When I made his meal, I used 3 pinches of salt. Instead of 2. Each journey begins with a single step, I guess. I think I have everything you asked for. Then just as you have inspired me, let us see if I can return the favor. Time to cook. Wow. Mildif, that was inspired. Next time you want the best provisions, you know where to find me. Your next order of any dish will be on us. Thanks. And don't forget to stand up for yourself. Funny you should say that. As it happens, I'm already cooking up my next portion of resistance. Hope to see you again. 3 pinches of salt. Back for that free meal? Go on, peruse my menu. चलो फ्री में मिल रहा है तो ले ही लेता है। लोकल स्ट्यू 20% मैक्सिमम हेल्थ। नाइस। रिकवर कंसंट्रेशन फास्टर। ऑटोमेटिकली रिकवर हेल्थ सूनर। melee attacks deal more damage. Place traps. ये वेरी रेयर वाला ही लेते हैं ना अगर फ्री में मिल रहा है तो। ओके इसमें तो मेली वाला है। रिकवर वेपन स्टामिना फास्टर। यही लेते हैं। मीट इन द मिडल। A hearty Oseram meal made by wrapping dough and around a skewer of ground wild meat, then baking it until golden brown. बर्गर हो गया ना ये। मीट इन द मिडल। एनीवे यही लेता है आई थिंक। बाय। और लोकल स्ट्यू भी लेते हैं आई थिंक। प्लस 20% मैक्सिमम हेल्थ। शिफ्ट शार्ड्स। ओ 500 शार्ड नहीं 100 शार्ड्स। ओके हमारे पास 500 है। बस 2 ही पिंच डालना मेरे इसमें। चलो अब मेरे को ये देखना था वो मिनी गेम। ओ स्किल पॉइंट। हंटर। इंक्रीज योर वेपन स्टैमिना लिमिट। बिल्ड अप वैलर फास्टर। हेल्थ पोशन का तो
इतना यूज नहीं करता मैं हेल्थ पोशन एक्चुअली। ओके इसमें 2 चाहिए। स्टेल्थ का देखता है। साइलेंट स्ट्राइक डील्स मोर डैमेज, यस लेता है। क्योंकि मैं वो फैंगहॉर्न को मार नहीं पाया था एक हिट में। It might be a good idea to stock up on some food before I head back out. And see what चलो else Ildif's cooking up. ट्राई करते हैं मिनी गेम। Revel in some strike, sister? Let me set the board. I was just passing by. First timer, huh? Don't worry about it. I'll go easy on you. You got any pieces? No. Well, aren't you in luck then? I got an extra set, a Tanakh original straight out of the Forbidden West. Sit. I'll run you through it in a hot spark. I'll give you something special if you win it on my boards, too. ओके 1 2 3 4 5 6 मिनी गेम्स। ओके बिगनर्स ट्यूटोरियल से ही शुरू करता है। फिलहाल तो मेरे को कुछ समझ रहा नहीं है लेकिन स्टार्ट कर देता है। Let's start off simple. The Tanakh like to say that Machine Strike is a game of pure strategy. We each get a set of pieces. Each piece represents a kind of machine, and each machine is worth a different number of victory points. And to win the game, you'll need to gain 7 victory points by destroying the opponent's machines. It can be tricky remembering the details of every machine, so we use these notes to keep track of them. You see that number on the top right corner? Okay, VP1. That there is how many victory points you'll get for destroying that machine. Notes also tell you how far a piece can move. Okay, those spaces. How powerful their attacks are. Okay. The distance they can strike from. And of course, their health. Health, okay. Okay, that's enough for now. Let's just play. I'll explain the rest as we go. I own the board, so I get to choose who goes first. Since this is your first time, I'll let you go. Usually you get to choose which pieces to set on the board, but this will do for now. Pick up that machine piece to your right, and move it forward. Okay, right wala. And remember, each machine can only move a certain distance. Take a look at your notes if you need a reminder. Okay, 2 spaces तो लेफ्ट में 2 स्पेस, राइट में 2 स्पेस। वेल पीछे बोर्ड खत्म हो रहा है इसके लिए 8 और आगे 2। तो डायगनली एक ही क्यों है? ओके डायगनली मतलब ऐसे हुआ 1 और 2, इसके लिए डायगनली 1 है। सो अगर पीछे डायगनली जाना है तो 1 2। ओके मेक सेंस। डायगनली 1 है। सीधे जाते हैं अभी के लिए। Easy enough, huh? Now, you get to move 2 machines each round. So go ahead and pick a second machine. ओके यही बचा है हम लोग के पास। इसको भी आगे लेके जाता है। नहीं यहाँ पे तो नहीं है। ठीक है स्प्रिंट मूव। Perfect. There's not much else to do for now, so just end your turn. ओवरचार्ज रोटेट। Best end your turn so we can keep going. ओके नहीं रोटेट नहीं कर सकते। एंड टर्न ट्रायंगल। We're forging onwards. Let me move my pieces here. And we're back to you. This time, why don't you try attacking one of my pieces? Try with that machine on your right first. लेकिन इसको कैसे अटैक कर सकेंगे? 1 2 और 3 हो गया ना ये। यहाँ से भी गए तो 1 2। ओके Now move the piece close enough to attack one of my machine. When performing an attack, you'll be testing your machine's combat power against the opponent's. A machine's combat power is a combination of the terrain your machine is standing on and its own attack power. This board only has grassland terrain,
which has no effect on a machine's combat power. And your current machine has 2 points of attack power. So in total, your machine's combat power equals 2 points. Since my machine isn't the one attacking, it has 0 points of attack power. And just like your machine, it's not affected by grassland terrain. So right now, the difference in combat power between the two machines is 2 points. This means your machine can do 2 points of damage to my machine. Did you get all that? समवॉट आई थिंक समझ गया. हमारा अटैक 2 है और उसकी हेल्थ वो पीछे वाले की 4 है और इसकी 2 है, तो ये तो अभी मर जाएगा. पीछे वाले को 2 बार मारना पड़ेगा. ओके समझ गया. आई थिंक मैं वो ग्रासलैंड टेरेन का वगैरह नहीं समझा हूँ, लेकिन कोई नहीं, सीख लेंगे जैसे हम लोग खेलेंगे. You were a smart one. Finish up by attacking my machine. मेरे को ये नहीं समझा मैं अटैक कैसे कर पा रहा हूँ. मे बी उसके एडजेसेंट जाके, मतलब 1 और 2 बस इतना ही जाना पड़ता है. मतलब 1, 2 और 3 काउंट नहीं होता. तो चलो अटैक ही करते हैं. Not pulling any punches, huh? Now grab that second machine of yours. ओके नहीं, इसकी भी 4 हेल्थ थी. समझ गया. See how your machine can't move close enough to attack mine? You can make your machine sprint. That lets it move 1 space further. Try it out. तो 1, 2 और 3, यस 3 बार स्प्रिंट. Downside to sprinting is that your machine can no longer attack. Now, some players like to take a risk and overcharge their machine in cases like this. Overcharging lets you attack after a sprint, but it will damage your machine's health by 2 points. So use at your own discretion. Let's try doing that now so you can see what I mean. ओके ओवरचार्ज. ओके ओवरचार्ज से हमारी 2 हेल्थ जाती है, लेकिन हम लोग और एक टर्न खेल सकते हैं वो मशीन से. ओके इंटरेस्टिंग. अटैक करते हैं अब. That's about it for your turn then. एंड टर्न. Now, I'll let you in on a neat trick. That machine of yours, the one closest to me, grab a hold of it. ये वाला. Same as in the wilds, machines have both armored points and weak points. You can see them marked on the pieces. Blue shows where their armor is thickest. Hit them there and you'll do some damage, but not a lot. Now, red shows the machine's weak points. Hit those and you'll deal a mighty blow. Here, let me show you. Rotate that piece so your machine faces mine. L2 and R2. नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे. Let that machine have it. और अटैक. अटैक क्यों नहीं कर पा रहा? ओके हाँ. Off the board she goes, and there's your first victory points. You don't have 7 of them yet, so let's keep going. Your machine attacked mine, but hasn't moved yet. Go ahead and move downwards towards my remaining piece. ओके इसको. You've already attacked a machine and moved your piece. But if you overcharge your machine, you can attack a second time. And by the look of your machine's health, you'd be sacrificing your piece to defeat mine. But sometimes that can be a good thing. Overcharge your machine to attack mine a second time, and I'll show you what I mean. ओके हाँ, हम लोग की हेल्थ अभी 2 है, तो ओवरचार्ज करने से 0 हो जाएगी, लेकिन उसकी भी तो 0 हो जाएगी. और हमारा एक और बाकी है, तो हम लोग जीत जाएंगे. ओवरचार्ज और अटैक. Ain't that a thrill? Now, because your machine was knocked out at the same time as mine, we both get the victory points our machines are worth. Good news is, since you're the one attacking, you're going to receive your victory points before I do. Which means you can reach the coveted 7 victory points first. That's why sometimes losing a piece can be the best way to end a game in your favor. Now, you'll notice you didn't get quite up to 7 victory points this time, but you did destroy all my pieces. That means you're the winner! That wasn't so hard, was it? Just remember to always check for the best terrain to attack from. You'd be surprised the advantage you can gain over an opponent like that.
I know it saved my behind in a game or two. I'll try and remember that. Oh, before I forget, these are all my spare pieces. I want the Savior of Meridian to have them. It's a small set to be sure, but it should be enough to get you in on any strike games you find out there. You might even fancy looking out for them strike carvers. They've got all kinds of unique pieces that can turn a game in your favor, though they'll need the right materials to craft you one. Or you might find them in the wilds if you're lucky. I know I've lost my fair share of pieces after a night of machine hunting or brew hopping. No need to thank me. Always a pleasure to help out new strike players. Now, if you feel like playing a real game, I've got plenty of other boards. I could even teach you a few more tricks if you're up for it. Thanks. I'll think about it. Okay, tutorial completed. You're one step closer to mastering the game of Machine Strike. Beginner practice. Anyway, अभी के लिए तो Anytime, Red. yes. Fanghorn, Lancehorn, Scrapper, Grazer, Burrower. बहुत सारे पीसेस दिए इसने. Not bad. ये हमारा शेफ मिल्डुफ. एनीवे दोस्तों, फिर वो हमारी मैक्सिमम हेल्थ 313 है आउट ऑफ 250 फूड के वजह से. चलो एनीवे दोस्तों, आज के लिए बस यही ख़त्म करता है. मिलते हैं अगले पार्ट में. तब तक के लिए टेक केयर.